Good morning class. Today's topic is Spring Boot. What is Spring Boot? Spring Boot is a Java-based framework used to develop the standalone production-ready application with minimal configuration. Spring Boot एक Java-based framework है जो कि डेवलप करता है standalone production-ready application with minimal configuration. Introduced by the Pivot in 2014, it simplified the development of Spring application by offering the embedded service. और ये इंट्रोड्यूस हुआ 2014 में, सिंप्लीफाई करता है डेवलपमेंट ऑफ स्प्रिंग एप्लीकेशन बाय ऑफरिंग द एम्बेडेड सर्वर, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड फास्ट स्टार्टअप. Spring Boot is built on the top of the Spring framework, used to create the standalone RESTful web application with minimal configuration. And Spring Boot built होता है top of the Spring framework, used to create, ये create करता है standalone RESTful web application with minimal configuration, and there is no need of external server to run the application because it has the embedded server like the Tomcat and Jetty. इसको स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक्सटर्नल सर्वर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें एम्बेडेड सर्वर होता है जैसे कि टॉमकैट एंड जेटी. फर्स्ट, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क इज़ द इंडिपेंडेंट. स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क इंडिपेंडेंट होता है. सेकेंड, इट क्रिएट द एग्जीक्यूटेबल स्प्रिंग एप्लीकेशन दैट आर द प्रोडक्शन ग्रेड. ये क्रिएट करता है एग्जीक्यूटेबल स्प्रिंग एप्लीकेशन जो कि प्रोडक्शन ग्रेड में. व्हाट आर द फीचर ऑफ स्प्रिंग बूट? स्प्रिंग बूट के फीचर्स, देयर आर द मैनी यूजफुल फीचर ऑफ द स्प्रिंग बूट. स्प्रिंग बूट के बहुत सारे यूजफुल फीचर्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. First one is the auto configuration. Spring Boot automatically configure dependency by using the @enable auto configuration annotation and reduce the boilerplate code. Spring Boot automatically configure करता है dependency by using the @enable auto configuration annotation और reduce करता है boilerplate code को. ठीक है. Spring Boot starter POM. These starter POM are the pre-configured dependency. ये starter POM जो है वो pre-configured dependency होती है for function like database, security, Maven configuration. जैसे कि और फंक्शन होते हैं जैसे कि डेटाबेस है, सिक्योरिटी है, मेवन कॉन्फ़िगरेशन है. स्प्रिंग बूट CLI कमांड लाइन इंटरफेस. ये दिस कमांड लाइन टूल इज़ जनरली फॉर द मैनेजिंग डिपेंडेंसी. कमांड लाइन टूल जो है वो जनरली होता है मैनेज करने के लिए डिपेंडेंसी, क्रिएटिंग प्रोजेक्ट एंड रनिंग द एप्लीकेशन. क्रिएट करने के लिए प्रोजेक्ट और रन करने के लिए एप्लीकेशन. एक्यूएटर. स्प्रिंग बूट एक्यूएटर प्रोवाइड्स हेल्थ चेक. स्प्रिंग बूट एक्यूएटर प्रोवाइड करता है हेल्थ चेक्स को, मैट्रिक्स को एंड मॉनिटर द एंड पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन. और मॉनिटर करता है एंड पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन. इज ऑल्सो सिंप्लीफाई द ट्रबल शूट मैनेजमेंट. ये ऑल्सो सिंप्लीफाई करता है ट्रबल शूट मैनेजमेंट को. एम्बेडेड सर्वर. स्प्रिंग बूट कंटेन द एम्बेडेड सर्वर लाइक टॉमकैट एंड जेटी फॉर द क्विक एप्लीकेशन रन. स्प्रिंग बूट कंटेन करता है एम्बेडेड सर्वर जैसे कि टॉमकैट एंड जेटी फॉर द क्विक एप्लीकेशन रन. नो नीड ऑफ एक्सटर्नल सर्वर. इसके लिए एक्सटर्नल सर्वर की ज़रूरत नहीं होती. फीचर्स ऑफ द स्प्रिंग बूट. फर्स्ट वन, इजी कॉन्फ़िगरेशन. सेकंड, डेवलपर टूल. थर्ड इज़ द स्टार्टर डिपेंडेंसी. फोर्थ इज़ द स्प्रिंग बूट एक्यूएटर एंड फिफ्थ इज़ द एम्बेडेड सर्वर. ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करता है, सो इजी कॉन्फ़िगरेशन. स्टार्टर डिपेंडेंसी होता है स्प्रिंग बूट और इसमें एम्बेडेड सर्वर होते हैं जैसे कि हमारे टॉमकैट एंड जेटी. और एक्यूएटर इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हेल्थ चेक्स, मैट्रिक्स और मॉनिटर करता है एंड पॉइंट्स ऑफ द एप्लीकेशन. और ऑल्सो सिंप्लीफाई द ट्रबल शूटिंग मैनेजमेंट. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्प्रिंग बूट? स्प्रिंग बूट को यूज़ करने के क्या एडवांटेज है?
स्प्रिंग बूट इज़ अ फ्रेमवर्क दैट क्रिएट द स्टैंड अलोन। स्प्रिंग बूट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि क्रिएट करता है स्टैंड अलोन प्रोडक्शन ग्रेड स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन। स्प्रिंग बूट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि क्रिएट करता है स्टैंड अलोन प्रोडक्शन ग्रेड और स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन को। सो दिस फ्रेमवर्क हैज़ मैनी, इस फ्रेमवर्क के बहुत सारे एडवांटेज हैं। फर्स्ट वन, ईजी टू यूज़। द मेजोरिटी ऑफ बॉयलर प्लेट कोड रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए स्प्रिंग एप्लीकेशन इज रिड्यूस्ड बाय द स्प्रिंग बूट। द मेजोरिटी ऑफ मेजोरिटी जो होती है बॉयलर प्लेट कोड की रिक्वायर्ड करता है टू क्रिएट ए स्प्रिंग एप्लीकेशन इज रिड्यूस्ड बाय द स्प्रिंग बूट। Second is the rapid development. Spring Boot opinionated approach and auto configuration enable developers to quick develop apps. Spring Boot opinionated approach है जो कि auto configuration है, enable करता है developer to quick develop apps without the need for the time consuming setup, cutting down on development time. Third is the scalable. Spring Boot apps are intended to the scalable. Spring Boot app जो है वो intended है to be the scalable. This implies may be simply scaled up or down to match your application need. ये implies होता है they may be scaled up or down to match your application, यानी कि application की जो need होती है उसको मैच करने के लिए, ठीक है। ये अप और डाउन दोनों ही होता है। प्रोडक्शन रेडी मैट्रिक्स, हेल्थ चेक्स एंड एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन। मैट्रिक्स, health checks and external configuration are just a few of the features that the Spring Boot include। यानी कि मैट्रिक्स, हेल्थ चेक और एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो स्प्रिंग बूट में इंक्लूड होते हैं। दे एंड आर डिज़ाइन फॉर द यूज़, और डिज़ाइन यूज़ होते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए। डिफाइन द की कंपोनेंट ऑफ स्प्रिंग बूट। की कंपोनेंट्स ऑफ द स्प्रिंग बूट इज़ द स्प्रिंग बूट स्टार्टर, second is the auto configuration, third one is the Spring Boot actuator, and fourth is the Spring Boot CLI, fifth is the embedded server. Why do we prefer the Spring Boot over Spring? There is a table that summarizes that why we use the Spring Boot over Spring framework. Spring or Spring Boot. Spring is the more complex. Spring Boot is the easier. Production readiness, less production ready. Spring Boot is the more production ready. Scalable, Spring is the less scalable. Spring Boot is the more scalable. Speed is the speed of the Spring is slower. Spring Boot is the faster. Customization, less customizable. Spring Boot is the more customizable. Explain the internal working of the Spring Boot. Here are the main steps involved in the Spring Boot works. First one is the start by creating a new Spring Boot project. First one is create the new Spring Boot project. Second is add the necessary dependencies to your project. ये add करता है necessary dependency हमारे project में. Third, annotate the application with the appropriate annotation. ये annotate करता है application with the appropriate annotation. Fourth is the run the application. Why? What are the Spring Boot starter dependencies? Spring Boot provide many starter dependencies. Some of them which are used most of the in the Spring Boot application are listed below. First is the Spring data JP starter. Second, web starter. Third is the security starter. Fourth is the test starter, and fifth is the Thymeleaf starter. How does a Spring Boot application get started? Spring application get started by calling the main method with the Spring Boot application annotation in the Spring application class. This method take a Spring application builder object as a parameter, which is used to configure the application. Once the Spring application object is created, the run method is called. Second, once the application context is initialized, the run method start the application embedded server. कैसे Spring Boot की application start होती है? Spring Boot get started by Spring Boot start होता है calling the main method with the
स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, मेन मेथड के साथ हम स्प्रिंग बूट एनोटेशन को कॉल करते हैं विद इन द स्प्रिंग एप्लीकेशन, यानी कि स्प्रिंग एप्लीकेशन में मेन मेथड के साथ हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन को कॉल करेंगे जब हमारी स्प्रिंग एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। दिस मेथड टेक्स ए स्प्रिंग एप्लीकेशन बिल्डर ऑब्जेक्ट एज ए, ये मेथड टेक करेगा स्प्रिंग एप्लीकेशन बिल्डर ऑब्जेक्ट, यानी कि स्प्रिंग एप्लीकेशन बिल्डर ऑब्जेक्ट एक पैरामीटर्स की तरह होगा विच इज़ यूज टू कन्फिगर द, जो कि कन्फिगर करेगा एप्लीकेशन की तरह। वंस द स्प्रिंग एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, अगर एक बार स्प्रिंग एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी द रन मेथड इज कॉल, तो रन मेथड कॉल होगा। सेकेंड, वंस द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इज इनिशलाइज, अगर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इनिशलाइज होगा द रन मेथड स्टार्ट द एप्लीकेशन इज एम्बेडेड सर्वर। Why does the Spring Boot annotation application do internally? The Spring Boot application annotation combine the three Spring Boot application annotation को हम combine करेंगे 3 annotation से। These are the 3 annotation are the @configuration, @enable auto configuration, @component scan. @ is auto configuration. This annotation automatically configure beans in the class path and automatically scan the dependency according to the application need. ये एनोटेशन ऑटोमेटिकली कन्फिगर करता है बीन्स इन द क्लास पाथ एंड ऑटोमेटिकली स्कैन द डिपेंडेंसी अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन नीड, यानी कि ये एनोटेशन ऑटोमेटिकली कन्फिगर करेगा बीन्स को क्लास पाथ में और ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा डिपेंडेंसी अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन नीड। Second is the component scan. This annotation scan the component. ये annotation scan करेगा component @service in the package or annotated class and sub package, यानी कि ये annotation scan करेगा component @service and in the package of annotated class and its sub package. Third is the configuration. This annotation configure the beans and package in the class path. Spring Boot application automatically configure the application based on the dependency added during project creation and bootstrap the application by using the run method inside the main class of the application. Spring Boot application is the combination of @ of the configuration plus @enable auto configuration, and third is the @component scan. What is Spring Initializer? Spring Initializer is a tool that helps to create the skeleton of the Spring Boot project. Spring Initializer एक ऐसा टूल्स है जो कि हेल्प करता है क्रिएट में skeleton of the Spring, यानी कि Spring Boot प्रोजेक्ट का जो skeleton होता है उसको क्रिएट करने के लिए Spring Boot Initializer यूज़ होता है, ठीक है। और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग ए मेवन और गिटहब फाइल टू बिल्ड द एप्लीकेशन, इट इज़ सेट अप द फ्रेमवर्क फ्रॉम स्क्रैच। What are the Spring Boot CLI and most CLI command? Spring Boot CLI is a command line tool that can be used to create a run and manage Spring Boot application. It is a powerful tool that helps us to get started with the Spring Boot quickly and easily. It is built on the top of the Groovy programming language. Most CLI commands are the run, test, jar, var, init, help. What are the basic Spring Boot annotation? Spring Boot application. This is the main annotation used to bootstrap से Spring Boot application, यानी कि Spring Boot application एक मेन annotation है जो कि bootstraps होता है Spring Boot application में। ये combine करता है 3 annotation @configuration, @enable auto configuration and @component scan. It is widely placed on the main class. ये widely placed होता है main class of the application. @configuration. This annotation, ये annotation used to indicate that a class contain the configuration method for the application context.
ये annotation used होता है indicate that a class contains the configuration method for the application context. It is typically used in the combination with @bean annotation to define the beans of their dependency. Component. This annotation is the most generic annotation for any Spring managed component. ये annotation is the most generic annotation for any Spring managed component. It is used to mark a class as a Spring bean that will be managed by the Spring container. @REST controller. This annotation is used to define the RESTful web service controller. It is a specialized version of the controller annotation that include the response annotation by default. Request mapping. This annotation is used to map the HTTP request to a specific method for a controller. It can be applied at the class level to define the URL for all the method in the class. What is the Spring Boot dependency management? Spring Boot dependency management make it easier to manage the dependency in a Spring Boot project. Spring Boot dependency management make it easier to manage the dependency in a Spring Boot project. It makes sure that all necessary dependencies are appropriate for the current Spring Boot version and are compatible with it. Spring Boot dependency management make it easier to manage the dependency in a Spring Boot project. It makes sure that all the necessary dependency are appropriate for the current Spring Boot version and compatible with it. It is possible to change the port of an embedded server in the Spring Boot. It is possible to change the port of the embedded server embedded Tomcat server in a Spring Boot application. The simply is used to set the server port property in your application properties file. For example, to set the property port to the 8081 and the following property of application properties file. What are the starter dependency of Spring Boot module? Spring Boot starter are the collection of the pre-configured Maven dependency that makes it easier to develop the particular types of application. These starter include dependency, second is the version control, third is the configuration need to make the certain feature. To use the Spring Boot starter dependency, we simply use to edit your project in the form.xml file. What are the default port of the Tomcat in Spring Boot? The default of the embedded Tomcat server is the Spring Boot is the 808. We can change the default port by setting the server port property in your application.properties file. We can use the disable the default web server in the Spring. Yes, we can disable the web server in the Spring. To do this with the server port property and application. How to disable a auto configuration class? To disable a auto configuration class in the Spring Boot application, we can use the @enable auto configuration annotation with the exclude attribute. We can create a non-web application in Spring Boot. Yes, we can create a non-web application in the Spring Boot. Spring Boot is not just for the web application. Use the Spring Boot. We can create the application like the microservices, console application and batch application. Describe the flows of the HTTP request through the Spring Boot application. Let us follow the HTTP request through a Spring Boot application is follows. First is the client take a request to the controller layer. Controller layer send the request to the service layer and then goes to the model. क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा कंट्रोल लेयर को. कंट्रोल लेयर क्या करेगा कि वहाँ से सर्विस लेयर पे पहुँचेगा. सर्विस लेयर उस रिक्वेस्ट को भेजेगा model to database and then come to the result is come into the repository layer. First client make a HTTP request, get post put delete to the browser. यानी कि HTTP रिक्वेस्ट जो क्लाइंट जो है वो HTTP रिक्वेस्ट इस ब्राउज़र को भेजेगा. आफ्टर दैट द रिक्वेस्ट विल गो टू द कंट्रोलर. उसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी कंट्रोलर पे वेयर ऑल द रिक्वेस्ट विल बी मैप्ड एंड हैंडल. जहाँ पे सारी रिक्वेस्ट मैप्ड होगी हैंडल होगी. आफ्टर
आफ्टर दिस इन द सर्विस लेयर, ये सर्विस लेयर में ऑल द बिजनेस लॉजिक विल बी परफॉर्म। आफ्टर इन द सर्विस लेयर, जब सर्विस लेयर पे जाएंगे तो सारे बिजनेस लॉजिक परफॉर्म होंगे। इट परफॉर्म द बिजनेस लॉजिक ऑन द डेटा दैट इज़ मैप टू द JPA यूजिंग द मॉडल क्लास। इसके बाद जब परफॉर्म करेंगे हम बिजनेस लॉजिक डेटा के ऊपर, यह मैप्ड होगा JPA में जावा persistent API यूजिंग द मॉडल क्लास। इन रिपोजिटरी लेयर ऑल द CRUD ऑपरेशन आर बीइंग डन फॉर द REST API। रिपोजिटरी लेयर के अंदर ऑल द CRUD ऑपरेशन आर बीइंग डन फॉर द REST API। रिपोजिटरी लेयर में सारे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म होंगे ऑन बीइंग डन फॉर द REST API। Fifth is the GSP page is returned to the end user if there no error are there। GSP पेज रिटर्न करेगा उसे एंड यूज़र को अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो। एक्सप्लेन द REST कंट्रोलर एनोटेशन इन स्प्रिंग बूट। @REST controller annotation is like a shortcut for building the RESTful services। @REST controller annotation is like a shortcut to building the RESTful services। @REST controller annotation is like a shortcut to building the RESTful services। It's combine the two annotation, ये combine करेगा दो annotation को। @controller marks the class as a request handler in the Spring MVC, marks करेगा class request handler में in the Spring MVC framework। @response body tell the Spring to convert a method return values object directly into the HTTP request instead of the rendering views। HTTP used to define the HTTP method get, post, put, return in the map of the controller। It marks a class as a controller class। REST controller is combine the two annotation @of controller and the @of response body। Controller used for the web application, REST controller used for the RESTful API। Third is the used with the @request mapping annotation to map the HTTP request with method। REST controller used to handle the request like the get, post, put and delete। कंट्रोलर मार्क्स करेगा क्लास एज ए कंट्रोलर, यानी कि मार्क्स करता है क्लास एज ए कंट्रोलर क्लास। REST कंट्रोलर में हम दो एनोटेशन करते हैं, @कंट्रोलर एंड @रिस्पॉन्स बॉडी। कंट्रोलर यूज में हम एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन होती हैं जिन्हें हम वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। @REST कंट्रोलर में वो यूज़ होती है RESTful API। कंट्रोलर में यूज्ड विद द रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन टू मैप द HTTP रिक्वेस्ट विद मेथड, यूज़ करेगा रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन टू मैप द HTTP रिक्वेस्ट विद मेथड। @REST कंट्रोलर में यूज टू हैंडल द रिक्वेस्ट लाइक द गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। Both annotations handle the request, but @REST controller priorities data response for building API। दोनों ही हैंडल करेंगे रिक्वेस्ट को, बट @REST कंट्रोलर प्रायोरिटीज़ करेगा डेटा रिस्पॉन्स फॉर हैंडलिंग API। रिक्वेस्ट मैपिंग @request mapping is the and second is the get mapping handle the various type of HTTP request, get, post, put। get mapping specifically handle the HTTP request। ठीक है, request mapping value the method request dot get mapping is an example। What are the difference between the @of the Spring Boot application and @of enable auto configuration annotations। @of Spring Boot application, when we want to use the auto configuration, enable auto configuration when we want to customize the auto configuration। @of Spring typically used on the main class of the Spring Boot application serving as the entry point। Enable auto configuration can be used on any configuration class or conjunction with @of Spring Boot application। Third is the Spring Boot application include the component scanning annotation to enable the component scanning। Enable auto configuration does not perform the component। Spring Boot application public class, ठीक है, public class my class, public static void main string pub। Spring application dot run my application dot class। configuration
is enable configuration, public class my configuration. What are the profiles in the Spring? Spring profile are the different scenarios for the Spring application depending on the environment. Spring profiles एक तरीके का different scenario होता है application depending on the environment. You define the set of configuration like the database, URL or different situation, development, testing, production. Second is the use the profile annotation to clarify which config belongs to where. यानी कि जो हम प्रोफाइल एनोटेशन को होती है वो क्लैरिफाई करते हैं कौन सा कॉन्फ़िग कहाँ पे यूज़ होगा. एक्टिवेट प्रोफाइल विद द एनवायरनमेंट वेरिएबल और कमांड लाइन ऑप्शन. एक्टिवेट करता है प्रोफाइल विद द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और कमांड लाइन ऑप्शन. टू यूज़ द स्प्रिंग प्रोफाइल वी यूज़ द सिंप्लीफाई. Simply need to define the Spring profile active property to specify which profile we want to use. Difference between the WAR and embedded. WAR is the contain all the files needed to deploy a web application to web server. Second is the embedded container. It is a web application server included in the same jar file as the application code. Third is the configuration is the require external configuration file web.xml, context.xml to define the web application. Embedded server use the configuration properties or annotation with the application code. Security can be deployed to a web server that is configured with the security feature. Embedded can be made more secure by using the security features that are provided by the JRB. ये कैन बी मेड मोर सिक्योर यानी कि बाय यूजिंग, यानी कि ये मोर सिक्योर करता है बाय यूजिंग द सिक्योरिटी फीचर जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं GRE से. व्हाट इज़ द स्प्रिंग बूट एक्चुएटर? Spring Boot actuator is a component of the Spring Boot framework that provide the production ready operational monitoring and management capabilities. स्प्रिंग बूट एक्चुएटर जो होता है वो कंपोनेंट होता है स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क में जो कि प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन रेडी ऑपरेशनल मॉनिटरिंग एंड द मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज. वी कैन मैनेज एंड मॉनिटर योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन वाइल इट इज़. यहाँ पे हम मॉनिटर कर सकते हैं application while it is running. How to enable the actuator in the Spring Boot application? Below are the steps to enable the actuator in the Spring Boot application. Add the actuator dependency. Second, enable the endpoint in the application properties. Third is run your Spring Boot app. Now we can access the Spring actuator endpoint at the URL on the management point. What are the purpose of using @component scan in the class file? Component scan annotation is used to tell the Spring to scan a package and automatically detect the Spring component configuration and the service to configure. The component scan annotation can be used of the following way. First is the without argument. Second is the with the package class. Third is the with the base package. What are the request mapping and the REST controller annotation in the Spring Boot used for the @request mapping used to map a HTTP request to a handler method in your controller class can be used in the class level and the method level is supported by the HTTP method get, post, put, delete. Second is the URL path. Third is the URL parameter. Fourth is the request headers. @REST controller is a convenience annotation that combine the controller and the response. It indicates a controller where every method return a domain object instead of the view. @REST controller is the @controller and @response body. How to get the list of the beans in your Spring Boot application? Using the application context object in the Spring Boot, we can retrieve a list of the beans in your application. Second is the application context is responsible for managing the bean and their dependency. Can we check the environment properties in your Spring Boot application and how? Yes, we can check the environment properties in your Spring Boot application. The environment object in the Spring Boot application can be used to check the environment properties. Configuration setting of the application include
properties file, command line argument, and third is the environment variable. We can get the environment instance by calling the get environment method. How to enable the debugging log in the Spring Boot application? To enable the debugging log in the Spring Boot application, follow add the logging level to the application.properties. Configure the log pattern to include the useful information. Run the Spring Boot application. Use the actuator endpoint. The log level can be changed at the runtime. What are the dependency injection and its type? Dependency is a design pattern that enable us to produce the loosely coupled component. In the DI is the object ability to complete a task. Design pattern is okay enable us to produce a loosely coupled component. Well, us to produce a loosely coupled component. In DI, an object ability to complete a task. An object की ability जो complete करती है task को depend on the project. There are the three type of dependency injection. First is the constructor injection. This is the most common type of the DI. In the ये एक most common DI है Spring Boot में. In construction injection, the dependency object is injected into the dependent object constructor. Second is the setter injection. In setter injection, the dependency object is injected into the dependent object setter method. Third is the field. In the field injection, the dependency object is injected into the dependent. यानी कि इसमें field injection में dependency object जो है वो inject होगा dependent object field में. What is the IOC? IOC in a version control container in the Spring Boot is essentially a central manager for the application object that control the creation, configuration, and management of dependency injection of object, also referred as a DI container. What are the difference between the constructor and setter injection? Dependencies are provided through the constructor. Dependencies are provided through the constructor parameter. Setter dependency are the set through the setter method after the object creation. डिपेंडेंसी को हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू द कंस्ट्रक्टर पैरामीटर. सेटर डिपेंडेंसीज आर द सेट थ्रू द सेटर मेथड आफ्टर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन. सेकेंड, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन promote the immutability as the dependency are set at the creation. Setter injection dependency can be changed dynamically after the object creation. Dependency overriding, harder to override the dependency with the different implementation. Setter allow the easier override of the dependency using the different setter values. What is the Thymeleaf? Thymeleaf is a Java-based server-side template engine used in the Java web application to rendering the web page. यानी कि Thymeleaf जो होता है वो Java based server side template engine है, यूज़ करता है Java application to render the dynamic web page. It is a popular choice for the server side templating. एक पॉपुलर चॉइस है सर्वर साइड टेम्पलेटिंग इन द स्प्रिंग इकोसिस्टम में इंक्लूड द स्प्रिंग बूट. एक्सप्लेन द स्प्रिंग डेटा एंड व्हाट इज द डेटा JPA. Spring Data is a powerful framework that can be used to develop the data-oriented application. Spring Data जो है वो powerful framework है जो कि यूज़ होता है डेवलप करने के लिए data-oriented application. It's aimed to simplify the development of data-centric application by offering the abstraction, utilities, and integration with various data sources. Spring Data JPA. This project provides the support for accessing the data from the relational database using JPA. Explain the Spring MVC model, view and controller. Spring MVC is a web framework built on the top of the Spring framework. It provides a comprehensive programming model for the building the web application. What are the Spring Beans? An object that is managed by the Spring IOC container is referred to as a Spring Bean. A Spring Bean can be any object. What are the inner beans in the Spring? An inner bean refers to the bean that are defined within the scope of another bean definition. It is a way to declare a bean inside the configuration of another bean without explicitly given to the unique identifier. To define an inner bean in the Spring, we can declare it as the nested element with the configuration of enclosing bean. What is the bean wiring? Bean wiring is a mechanism in Spring that is used to manage the dependency between the beans. It allows the Spring to inject the collaborating beans into each other. There are the two types of the bean wiring. First is the auto wiring, second is the manual wiring.
Spring Boot dev tools provide a number of development time features enhanced to increase the developer productivity and can be used for the following purpose. Automatic application restart. Second is the fast application startup. Third is the actuator endpoint. Fourth is the additional development utilities. What the error to if S2 is not present in the below is the error if the S2 is not present in the class path. Mention the step to connect the Spring Boot application to a database using the to connect an external database like the MySQL, Oracle, or Spring Boot application using the JDBC. We can need to follow the below steps. Add the dependency for JDBC driver of database. Create an application properties file. Configure the database connection properties. Create a JDBC template. We use the JDBC template to execute the SQL queries and the statement.